ensuring their protection, rehabilitation, and reintegration into the society. We need to put the children back into the society. Earlier, Madam Rabia also referred to the fact that tota chori hua to jail mein baitha. That's not it. The children have to go back into the society. We'll talk about diversion and other things. Reintegration is critical for children. I mean, आप इनको आम adults की तरह treat नहीं कर सकते. They have to go back into the society. So when we established the first child court in Lahore, the concept was कि बच्चों को अदालती जो निज़ाम है उसका उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनको डिस्टर्ब मत करें, उनको अदालती निज़ाम में से मत गुजारें. सो हमने चाइल्ड कोर्ट सेपरेट एक कॉम्प्लेक्स के बाहर साइड पे बना दिया कि चाइल्ड आए फारग करें, get done with his case so that he gets back to life, you see, rather than his case is tagged along with all the other cases. और 15 साल 20 साल बच्चे को भी लग रहे हैं उस केस में से गुजरने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल केस हो. The child could be a witness in a case, the child could be just a respondent in that case or defendant, or could also be an accused. तो उसको फारग जल्दी करें. That was the concept of child courts that we tried to establish, and we plan to do that. And Justice Jamal is here, who is very actively participating in a number of reforms, that we need to take child courts in the country, all over the country. उसको बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ केस मैनेजमेंट की बात है कि बच्चों के केसेस सारे उधर चले जाएं. आई एम श्योर इस्लामाबाद हाई कोर्ट could have a look at that also. So this system emphasizes restorative approach over punitive measures. That's the critical part, aiming to create opportunities for children to leading fulfilling lives. As Nelson Mandela aptly said, there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. So हमारा टेस्ट क्या होगा, जुडिशरी का टेस्ट क्या है कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं. बेखल अगर हमारे मार्क्स लगने हैं, इनको तो ए ग्रेड मिल गया है, हमें नहीं मिला अभी, लेकिन हमें ए ग्रेड तब मिलेगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम बच्चों के लिए क्या कर रहा है.